Hi, welcome to the next class. Negative interrogative sentences. Passive voice for future tense. Part 2 of 3 continues for negative interrogative sentences. मेथड है हमारे पास. सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड आता है. व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, होम, होस. फिर विल या शैल में से कोई एक आता है उस रूल इस मेथड के मुताबिक. और उसके बाद ओ फॉर ऑब्जेक्ट मफूल जिस पर काम किया जाए. ऑन विच एन एक्शन इज़ परफॉर्म्ड. तो फिर नॉट, उसके बाद बी, बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्वेश्चन मार्क. तो इसके लिए हमारे पास पहले सेंटेंस है, उसकी ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं की जा रही होगी. वाई will his wish not be being granted या fulfilled. तो फिर देख लीजिए, उसकी ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं की जा रही होगी. Why will his wish not be being granted. क्या ये फार्मूले के मुताबिक है. ये क्वेश्चन वर्ड आ गया, will आ गया, और his wish ये आ गया, और not be being granted और question mark. So the whole sentence is correct according to the method and formula because the method is very important. सेब क्यों नहीं खाए जा रहे होंगे. Why? Will the apples not be being eaten. Eat, ate, eaten, third form of verb. सेब क्यों नहीं खाए जा रहे होंगे. Why will the apples not be being eaten. तो उसके बाद है, क्या उसके ख़त का जवाब नहीं दिया जा रहा होगा. अब क्या के लिए फिर हमने ये इसीलिए शामिल किया है, क्या पिछली क्लास की तरह जहाँ क्या आ जाएगा तो फिर हम क्वेश्चनिंग वर्ड वाली बात भूल जाएंगे. सिर्फ इतना मेथड याद रखेंगे, इतना. Will his letter not be being responded. तो क्या है, क्या उसके ख़त का जवाब नहीं दिया जा रहा होगा. Will his letter not be being responded. I hope you understand. If you want to ask me anything more, you can ask me in the comment box, and I hope you subscribe my channel. Thank you very much.